morning children. Today we will do study of zeros of polynomials. In last class we have studied about what is polynomials. For example, these are some examples of polynomial. Okay, in last class we have studied about polynomials. Examples of polynomials are x plus 2, x square plus x plus 1, x2 plus x square plus 2x plus 3. Okay, now in this topic, zeros of polynomial, we will study about zeros of these equation. इन इक्वेशंस में वेरिएबल क्या है? x है, तो इसका जीरो क्या हुआ? जीरो मीन्स x की वैल्यू क्या पुट करें? What we will put value of x कि इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो बन जाए. ओके, तो इसमें सिंपल सी बात है, x के अंदर 2 ऐड करना है तो जीरो बनना चाहिए. तो x की वैल्यू क्या बनेगी? -2. x तो क्या बनेगा? -2. -2 plus 2 equal to 0. Simple. x square plus x plus 2. It's a quadratic equation. तो इसके भी पॉलिनोमियल्स होंगे, बट इसके भी जीरोस होंगे, बट इसके जीरोस कितने होंगे ये भी देखो. x की हाईएस्ट पावर क्या है? इसका आएगा 1 जीरोस. x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 जीरोस. x की हाईएस्ट पावर 3, तो 3 जीरोस. ओके, डन. The power of variable is equal to number of zeros in any polynomial. Okay, कोई भी algebraic equation हो, polynomial हो, तो उसकी zeros की quantity कितनी होगी? कि जो variable दे रखा है उसकी highest power क्या है? Highest power 1 है, तो क्या बना? 1 0. 2 है तो 2 zeros. 3 है then 3 zeros. Okay, now we will study how to find or check the given number is zeros of polynomials. किसी polynomial का zeros कैसे find करते हैं? या एक variable equation दे रखी है और उस variable की कोई value दे रखी है randomly. We have to check that randomly value is zeros of polynomial is yes or not. वो value पता लगानी है polynomial की zeros है या नहीं है. Okay, now question number exercise 2.2 है zeros की. First question is find the value of the polynomials. Find the value of polynomials five x minus 4x square plus 3 8 x equal to 0. Second, x equal to -1. Third, x equal to 2. Okay, there is a polynomial 5x minus 4x square plus 3. Okay, listen. कल हमने आपको बताया था in our previous class that polynomial की जो highest power होती है उसके according भी equations के नाम होते हैं. highest power क्या है? 2. तो ये कैसी equation है? quadratic equation है. कैसी equation है ये? quadratic equation. इस equation का नाम क्या है? quadratic equation भी है. इसको हम polynomials भी कह सकते हैं and quadratic equation भी बोल सकते हैं. Now we have to find value of this quadratic equation. 8x equal to 0. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करो. In second case x equal to -1 and in third case x equal to 2. Okay, x equal to 0. Quadratic equation is 5x minus 4x square plus 3. Value of x is 0. 5 multiplied by 0. 4 multiplied by 0 square plus 3. 5 zeros are 0.
0 square 0 and 0 multiplied by 4 is 0 plus 3, then answer बना 3. Okay, x equal to -1, 5x minus 4x square plus 3. 5 multiplied by -1, 4 multiplied by -1 square plus 3. 5 multiplied by -1 is -5 minus square of negative number is always positive. याद रखो बच्चों, square of a negative integer or number is always positive. Then -1 का square क्या बनेगा? +1. 3 -5 -4 plus 3. 4 multiplied by 4 minus minus plus 1 के minus का 9 plus 3 and it will become -6. Now x equal to 2. 5x minus 4x square plus 3. 5 multiplied by 2, 4 multiplied by 2 square plus 3. 5 2s are 10, 2 square 4 plus 3. 4 4s are 16 plus 3. Then 10 plus 3 13. 13 minus 16 is -3. Okay. The value of this polynomial 8x equal to 0 is 3. 8x equal to -1 is -6. 8x equal to 2 is -3. And there is no zeros of this equation from this. X equal to 0, x equal to -1 and x equal to 2 इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस नहीं होंगे, बिकॉज कहीं पर भी जो है जीरो नहीं आया है. अगर कहीं पर भी जीरो आता या यहाँ पर या यहाँ पर मान लो x इक्वल टू 0 पे हमें जीरो मिलता, इट मींस व्हाट? जीरो इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और यहाँ पर मान लो जीरो आता तो -1 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. आया कुछ समझ में? ओके. In question number 1, we have to find value of polynomial at given particular value. Polynomials के अंदर जो वेरिएबल था उस वेरिएबल की रैंडमली कुछ वैल्यूज दे रखी थी और उन वैल्यू पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find P0, find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. For each of the following polynomials. Okay. First question is Py is equal to y square minus y plus 1. Okay, we have to find P0, P1 and P2. Okay, equation is Py y square minus y plus 1. Okay, and we have to find P0. मीन्स जो वेरिएबल है y उसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना है? 0. y की वैल्यू पुट क्या करनी है? 0. देन 0 स्क्वायर 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर 0, 0 प्लस 1, तो इसका क्या आएगा? P0 इक्वल टू 1. ओके. नाउ P1 we know again Py equal to y square minus y plus 1. P1 is equal to 1 square minus 1 plus 1. ये minus 1 ये plus 1 cancel. 1 square is 1. Then value of Py at P1 is 1. इस इक्वेशन में y की जगह पे जब आप 1 रखोगे क्या मिलेगा? 1. Now P2 again we know Py is equal to y square minus y plus 1. Now P2, 2 square minus 2 plus 1. 2 square is
4 minus 2 plus 1. 4 minus 2, 2. P2 equal to 3. Okay. Now we will do one more question of this exercise. This top question number 2, which is question number 4. Now we will do question number 4, which is Px is equal to x minus 1 and x plus 1. Okay. Again we have to find P0, P1 and P2. Now we know Px equal to x minus 1 and x plus 1. We have to put value of variable equal to 0. P0, which is 0 minus 1, 0 plus 1. P0 will be equal to minus 1 multiplied by 1 and P0 is equal to minus 1. And P1, Px equal to x minus 1 and x plus 1. P1 is 1 minus 1, 1 plus 1. 1 minus 1, 0, multiply by 2, then 0 multiply by any number is 0. P2 is what? Px is equal to x minus 1 and x plus 1. 2 minus 1, 2 plus 1, 1 multiplied by 3, it means P1 equal to 3. Now the value of this polynomial in x equal to 0 is minus 1, x equal to 1 is 0. It means 1 is zeros of this polynomial. Okay, 1 जो है इस polynomial का क्या है? zeros. And P2 पे क्या मिली? P2 पे क्या मिला? 3. Okay, now we will do question number 3 is very simple. एक क्वेश्चन समझा देता हूँ. Remaining question you have to do. Listen. Question number 3 is verified question. Verify. What we have to verify? The first question is Px is equal to 3x plus 1 inverted comma x equal to minus 1 upon 3. In this question, Px equal to 3x plus 1 is given and value of x is given. We have to check the given value of x is zeros of this polynomial or not. ये जो x की वैल्यू दे रखी है ये इस polynomial की zeros है या नहीं है ये find out करना है. Now 3x plus 1, what is the value of x? Minus 1 upon 3, minus 1 upon 3 plus 1. मल्टीपल में है 3 बन जा 1 मल्टीप्लाई बाय minus 1 is 1, minus 1 and plus 1 कट होके क्या बना 0. then हम क्या लिखेंगे? yes, x equal to minus 1 upon 3 is zeros of 3x plus 1. Okay, simple. Remaining all questions you have to do it. Okay. Question number 4. Question number 4. Question number 4 is find the zeros of polynomial. Find the zeros of polynomials. Okay, it is also very easy. We will do two questions. First, Px equal to x plus 5, and second question we will do 4, which is Px equal to 3x minus 2. We have to find zeros. क्या x की जगह पे क्या आएगा कि x plus 5 0 बन जाएगा.
x की जगह पे क्या आएगा कि 3x minus 2 will be 0. It means we have to find zeros. इस इक्वेशन की जीरो पता लगाने के जीरो कहाँ आएगा? px equal to 0, x plus 5 equal to 0 and x will be minus 5. It means minus 5 is the zeros of this polynomial. Again, fourth question. px equal to 0, 3x minus 2 equal to 0, 3x equal to 2, x will be equal to 2 upon 3. It means zeros of this polynomial is 2 upon 3. Okay. Now question number 5 is fill in the blanks, which you have to do on self. Okay. For today is enough for this class. Okay. Zeros of polynomial. In second class, in our next class, we will learn divide of polynomials. कि polynomials का divide कैसे होता है. तो जिनको ये वैल्यू पुट करना आता है कि हाउ टू पुट वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, उससे डिवाइड के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे. इट मींस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, दिस 2.2 चैप्टर, यू हैव टू डू एट योर होम. ओके, गुड डे.